देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है, आओ देखे क्रिकेट टीवी। हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिकेट टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया जोशी, जॉइंड बाय हेतवी पटेल एंड टुगेदर विद आवर क्रिकेट गुरुज मिस्टर नारायण पसारी एंड मिस्टर निखिल मुरसावाला, एंड वी ब्रिंग यू टुडेज शो। टू फर्स्ट हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और फिर हम बात करते हैं एशिया कप के बारे में। फाइनल मैच का रिव्यू करेंगे जो कि खेला गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो भारत जीत गया। पाकिस्तान मेड 146 रन्स ऑल आउट, 19.1 ओवर्स, और इंडिया ने बनाए 150 रन्स एट द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन 19.4 overs, and we won for the ninth time. So I would say what a win, and what drama that followed and what controversy that followed. तो बात करते हैं मैच के बारे में. We'll start with Hetvi. Hetvi, what's your overall comment on review about the match that was played? It was quite thrilling match. I mean, Navratri is going on. We were playing Garba, but everybody was on their phone checking the scores, watching the Hmm. match. It was Yeah. quite interesting. The Pakistan, it was like we were on the edge. We were like, oh my God, Ashutosh Sharma went out, Shubman Gill was gone, and we were like, what will happen? What will happen? And then at the food court, everybody was quiet. It was pin drop silence, and then we saw the last four, so it was really interesting. You can imagine a food court full of Gujaratis being silent. Hmm. यस, एट वन पॉइंट ऐसा लग रहा था पता नहीं हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। काफी टाइट मैच रहा, एक्साइटिंग था, बहुत ही एक्साइटिंग था। तो नारायण सर, ओवर टू यू। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द मैच? So if you see, na, India beat Pakistan in the league match by 7 wickets, in the Super 4 by 6 wickets, and in the final by 5 wickets. So it is 7-6-5, you know. So that is the only victory Pakistan can say. कि हमने एक एक विकेट से हमने इंडिया को जीतने दिया actually, you know. So that is one thing. India had a very clean record, 7 out of 7 matches, you know, to win in an Asia Cup where we have very good contenders. So I think one was Surya winning the toss. You know, that was very, very commendable. Very important. काफी हारते हैं एक्चुअली, इंग्लैंड में बहुत हारे हैं, यू नो, गिल हारे हैं, मतलब कैप्टन हारे हैं, और ये जीत के उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग दिया तो काफी कुछ काम हो चुका था ना? लेकिन उसके बाद क्या था, पाकिस्तान ओपनर तो बहुत अच्छा स्टैंड थे, बोथ इन द पावर प्ले एज वेल एज यू नो, पावर प्ले में 45 रन बनाए, उसके बाद में भी चलते रहे। फरहान एंड फकर डिड अ ग्रेट जॉब, 84 रन इन 9.4 ओवर, गुड। ऐसा लगा था कि दे वर एस्केलेटिंग टू 170 180, ऐसा लग रहा था उस स्टेज से अगर आगे जाते। वरुण गॉट द ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया, नो डाउट अबाउट दैट, एंड द नेक्स्ट विकेट फेल एट 113 ऑफ आयुब, एंड देन इट वाज तू जा मैं आता हूँ, तू जा मैं आता हूँ, देख खाने में क्या रखा हुआ है। So it was that way. So within a span of 33 runs, they lost the entire team collapse actually, you know. So from 12.5 overs, 113 to 19.1 overs, 146. So, and no doubt, super bowling by the spinners, especially Kuldeep, you know, supported by Varun and Aksar. They got the first 8 wickets of the Pakistani team between them for 86 runs, and they choked the batters in those 12 overs actually. So that was fantastic bowling. Kuldeep was the best at 4 for 30, and Bumrah did the damage in the last 2 wickets. So 146 लगा इंडिया को काफी अच्छा चेज हो जाएगा. So that is from my side. From the Pakistani, let's take the Indian side later on. I think very good. I would say a couple of small cameos that we should not forget. I think Shivam Dube's 2 overs, over number 1 and 3 were brilliant. सिर्फ 12 रन देना, वो भी पावर प्ले में, और वो भी ऐसे दो बैट्समैन के सामने जो फुल फॉर्म में थे, जिन्होंने 9 ओवर में 80 रन बनाए या 10 ओवर में 90 रन बनाए, उनको आपने पहले 4 ओवर में काफी चोक किया। और मुझे लगता है ये जो 2 ओवर जो शिवम दुबे के थे ना, रिमेंबर हार्दिक पांड्या नॉट बीइंग देयर, एंड सडनली यू पुट दैट मैंटल ऑफ द ओपनिंग बॉलर
on somebody like at the best. He's not a pace bowler or something. And he comes in and, tightens his grip and just gives average of 6 runs in 2 overs in overs number one and three in the power play when only two fielders are outside that line. I think very commendable. You should not ignore that. Akshar Patel, I would make a special mention. Two wickets that he took, brilliant wickets, and I think I mean, there's nothing to talk about Varun. He has really bloomed into a fantastic bowler. He's held his nerve. He took two of the most important wickets that were there to be taken. Both the openers, I think he took, and the way he took them, the way he bowled was brilliant. And the 19th over. Remember, bowling the 19th over is not a joke. I'm very happy that the way the bowling was spread out. At 17, 18, 19, 20, you had two from Bumrah, you had one from Varun, and I think you had one from Kuldeep. So that, and as I mentioned yesterday, those were going to be key overs. Mohammad Nawaz was still batting. He could have taken us to the cleaners. He's known to do that. And because Bumrah had two overs, in his 18th over, he took one wicket. The way Harris Ruff he did that. That is and actually that indicates the Yorker because the Yorker actually dips on you. So this, I think he did it. He did it on purpose, of course. But what he was saying was, this was my Yorker that got you out. I think that was a great, very good ball that Harris Ruff was clean bowled. And then Mohammad Nawaz's wicket on the first ball of the 20th over. I think these two wickets that Bumrah took, I'm glad that he was pushed back there. I'm glad that 19th over was given to Varun because he's a very difficult guy to play, and then tailenders cannot play him that well. So very well done by Sky in terms by giving that one over to Tilak. I think he gave one over to Tilak Verma and 3 overs to Shivam. So between the two, they completed the 4 over quota of that bowler who is not a bowler, and I think that helped in getting that last 4 overs to the specialists. I think curtailing 33 runs, 9 wickets towards the end, brilliant performance. Kuldeep Yadav का क्या बोलना अभी? There's nothing to say. He's just out of the world, and he comes back 2 overs, 25 runs, no wicket, and then 4 overs, what, 29 runs or something, and 4 wickets, 30 runs and 4 wickets. तो Yeah, 5 रन, 30. 4 विकेट, Fourth of 2 ओवर. 30. आई मीन व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, क्या पूरा पूरा गेम पलट दिया, पूरा गेम. मैं सोच रहा था क्या 10वें ओवर के बाद की यार, ये तो हेतवी ने बोला 200 रन तो ये लोग 200 रन फिर बनाएंगे. लेकिन लेकिन गलत गलत टीम बनाने वाली है. और फिर हमसे बनेगा कि नहीं पता नहीं. So I think that was a brilliant comeback, a brilliant, and we must credit not just the bowlers, we must credit the captain, we must credit the fielders out there who supported the bowlers. Samson took, I think, two catches which were very good. Let's not forget him because he did take the diving catch of the captain Salman Ali Agha, and that was a brilliant catch that he took. I think that's good, and I think Sri Lanka, I think the India Sri Lanka match really helped us because you see the pattern is very similar. First three batsmen is taking to the cleaners, hitting us all over the place, and then later on bowlers come back. Exact pattern. Scoring was different. Scoring pattern was different, but the aggregate was different, but the pattern was the same. So I think a great match for us, and great to see this leading up to the World Cup. I think you'll be spoiled for choices. You will have a lot of spinners in your hand, a lot of wicket keepers in your hand. Pace bowling is a problem. If Hardik is not there, see what happened yesterday. I think that is one thing that is niggling me, that बॉस हमारे पास पेस बॉलर है ही नहीं क्या, और अगर है तो कहाँ है, क्यों हमने उनको इंडिया में रखा है या क्यों नहीं था यहाँ. आगे चल के हमें सोचना पड़ेगा कि किसी को नर्चर करना पड़ेगा कि हर्षित राणा डिड नॉट परफॉर्म वेल. Arshdeep was not at his best in the previous match. So, a lot of food for thought for the selectors regarding the pace bowling. Otherwise, everything else seemed to be okay. सो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टीवी का थॉट्स है, निखिल के थॉट्स है ना अबाउट बुमराह नॉट बॉलिंग द थर्ड ओवर, नहीं खिलाना चाहिए, दैट हैज रीच देम. That- तो उन्होंने अब की बार वो नहीं किया. दूसरा, आई वुड लाइक टू ऐड दैट दुबे ने अपने करियर में सेकंड टाइम ही पावर प्ले में बॉलिंग करी है. तो वही फर्स्ट बॉलर दैट वाज. Hmm. And Aksar is a solid thinking bowler actually. He's a thinking bowler. He thinks on the pitch and Absolutely. then he bowls.
and Kuldeep 17 wickets in Absolutely. the tournament, and the second guy behind him is Afridi at 10 wickets. So he was rightly judged as the tournament's good bowler of the tournament and super. Absolutely. क्या आपको लगता है कल इंडिया And ने जो you बैटिंग must शुरू also किया? criticize a little bit on the Pakistan batting, a little criticism because I Yeah, think they lost the way. The first three batters played very well. Later on, it just appeared that they just wanted to hit the ball. He hit the ball out of the park. They didn't want to take the singles and the twos, which was so critical. And I think that is where they lost the plot. And I think that was bad batting. Nothing taken from our bowlers, but the batting also went astray over there. And I think there was no plan, there was no thought कि हमें कैसे करना है, कैसे capitalize करना है. yeah, Priya. Yes. So how do you rate Tilak Verma's innings and Yeah, also support from Samson, Sanju Samson? Narayan. So, as I said, India thought 147 was a very easy target. Yes. So, somehow or the other, the top three batters, they picked up very wrong balls to hit. And कुछ luck भी रहता है. अभिषेक का luck नहीं रहा कल, ठीक नहीं रहा. Hmm. तो लेकिन गिल और सूर्या को दे ऑल्सो फेल चीप बेसिकली एंड देन केम मिस्टर तिलक वर्मा द वे ही प्लेड जेम ऑफ अ इनिंग्स ही प्लेड द शीट एंकर ऑन वन साइड सोचा मेरे को बिल्ड अप करना है सिंगल्स किया डबल्स भी मारे दो दो रन किया चौका छक्का जहां उसको लूज बॉल मिली उसने मारा एंड ही वाज एबली सपोर्टेड बाय सैमसन एंड देन दुबे also played a camo excellent camo he played those 30 odd runs was excellent for him. तो अभी थोड़ा सा जो मिडल ऑर्डर अपने बात कर रहे थे कि मिडल ऑर्डर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो अभी क्या है एज यू हैव पुट द राइट पर्सन फॉर द राइट स्लॉट आपने कुछ गेम में आगे पीछे नहीं किया जो आपने पुराने गेम में किया था इसको 6 पे बिला दो इसको 5 पे बुला कर दो तो ये अब की बार अच्छा बैठ गया सबका तो ऑल द प्लेयर्स वर लाइंड अप वेरी प्रॉपरली द बैटर्स एंड दे परफॉर्म एंड उन्होंने जिस तरह से बैटिंग को चुन करके एंड दे केप्ट द पेशेंस ऐसा नहीं था कि द रन रेट वाज ओवर 9.5 10 सवा 10 के ऊपर भी चला गया बीच में लेकिन दे डिड नॉट लूज द फोकस एंड आई थिंक आफ्टर 10 ओवर्स द ड्रिंक्स ब्रेक के अंदर गंभीर साहब खुद आए थे पिच के ऊपर उन्होंने बात करी समझाया होगा दैट इज रियली हेल्प अकॉर्डिंग टू मी एंड दिस वाज one of his life good innings of Mr. Verma. Yeah. So one question to all of you. How did the pressure Hetvi? moments decide the result? Hetvi, would you like to say anything? How did the pressure moments decide the result? I think, like Sir said, कि Tilak Verma he played an anchor. I mean I don't know, but वो chasing, वो turn of क्या बोलते हैं wicket change करना कि बीच में run लेना. What Pakistan did not do during their वो उनके 9 wickets में. That's what India did. Even when they lost the first three batsmen, Hmm. they rotated the wicket. They played smartly in that sense. So I think that's their winning point or that shows. Yeah. And from a pressure perspective, I think even I would also put a little bit of criticism on the Pakistani captaincy. Because if you see the way the bowlers and Harris Ruff bowling the 20th over, absolute harakiri. I mean, it did not make any sense whatsoever. And if you see the best bowler, Saim Ayub was given 3 overs. He gave 16 runs and didn't take any wickets. He had 1 over left. He could have come in somewhere in between, and he was a very economical bowler. It would have made a big difference. Harris Ruff 3.4 and 50 runs of 3.4. I mean, Wasim Akram called him a run machine on the bowling side. इससे बड़ी गाली कुछ हो नहीं सकती कि आपके आपके एक्सपर्ट कमेंटेटर ने आपको एज अ बॉलर रन मशीन बोला कि ये तो रन मशीन है सामने वाली टीम को रन दे देता है यूं 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 दे देता है तो मेरे ख्याल से ये जो एक मेरे ख्याल से जो अ, उन्होंने कहीं बॉलिंग जो किस तरह से उन्होंने प्लान किया मेरे ख्याल से कोई प्लान ही नहीं था कि शायद उनको लगा होगा कि 20 ओवर तक जाएगी नहीं मैच ये हमें पहले ही हरा देंगे तो हमारे से अच्छे बॉलर है पहले ही दे दो आप बॉलिंग के लिए तो शायद ऑल आउट कर दें उनको इसलिए आपने शाहिद अफरीदी को भी यूज़ कर लिया फ़हीम को भी यूज़ कर लिया
मोहम्मद नवाज का तो एक ही ओवर दिया आपने। हैरिस रफ को तो मैंने बताया क्या है, अबरार गुड बॉलर बट ही कुड टेक ओनली 1 विकेट। एंड देन साइम का एक ओवर रह गया, पता नहीं क्यों, जब ही वाज द बेस्ट बॉलर एक्चुअली इन ऑन, he was the most economical at 5.3, like Shaheen Afridi. So I think a little bit of captaincy issue there, maybe not thinking on the spot properly, not being guided properly by the seniors in the team. Salman Ali Agha is still pretty young, and he had people like Bakar Zaman and Shaheen Shah Afridi there to guide him. And I think I didn't see a lot of interaction on the field between the players of Pakistan, कि जाके advice दो, क्या करो क्या नहीं करना है. If you saw our team members, they were all congregating to the bowler, talking, advising, on the field placement, on what should be done, etc. दैट वो जेलिंग नहीं हो रहा था मुझे लगता है पाकिस्तान टीम में, और इस वजह से ये क्लोज मैच था, ये आसान नहीं था। आप देखिए हमने जो रन चार, आई थिंक 19.2 ओवर्स भी Four मेड, balls. 4 Yeah. 3 balls to spare, just 3 balls to spare, and that's touch and go. So it just another 6 7 8 runs का deficit होता, so it would have been very very difficult, it could have been gone either way. So I think bad planning on the bowling side. They could have used Saim Ayub for his fourth over. And India, of course, Tilak Verma ka kya kehna hai. I think what an outstanding innings. And you can't take anything away from that man. I think high pressure match, everybody shouting, screaming 20 for 3. Everybody gone, Abhishek, Shubman Gill, Suryakant Yadav. जैसे नारायण ने बोला तू जा मैं आया, खाने में क्या लगा हुआ है चलो देखो, तो ये तो इंडिया टीम यही कर रही थी। और फॉर्चुनेटली सम सैमसन मैच्योर हेड, होपफुली मैच्योर हेड, बीच में एक गलती की उसने, ड्रॉप हो गया। थैंक गॉड फॉर दैट, ही हैड दिस sudden bloody rush of blood, and that stupid shot he hit, I don't know what got into him. Thank God he was dropped. Had that catch been taken, the match could have taken completely डिफरेंट रुख में गया होता। और मेरे ख्याल से बट उन्होंने जो 25 में उन्होंने इनिंग्स को जोड़ा, जो इनिंग्स छूट रही थी, जो ड्रिफ्ट हो रहा था, उन्होंने इनिंग्स को जोड़ा, और मेरे ख्याल से वो बहुत ही अहमियत रखते हैं। वो एकदम एकदम डेलिकेट टाइम पे आए थे, और उन्होंने थोड़ा सा स्टेडी किया शिप को, और बाद में शिवम दुबे, फॉर मी ही इज द मैन ऑफ द मैच ऑनेस्टली, इट वाज नॉट तिलक वर्मा। That 2 overs that he gave, he bowled initially for 12 runs, and then making 33 of 22 balls at a scoring rate of 150, and it's a very difficult situation, young man coming into a high pressure situation for the first time, bowling for the first time, or the second time, as Narayan said, in the power play, and then coming in this situation and doing what he did, brilliant. And I think for me, he was the player of the match. I was so happy with the way he got out, because Shaheen Shah Afridi kept his cool and took that catch on the boundary. Otherwise, Shivam Dube would have finished the match just at that spot. लेकिन उन्होंने शाहीन शाह ने अच्छा कैच पकड़ा बिल्कुल बाउंड्री पे, इसीलिए रिंकू को आना पड़ा। और 20 ओवर के पहले बॉल, सेकेंड बॉल, थर्ड ओवर में 6 मारा तिलक वर्मा ने। सो बट गुड प्लेइंग फ्रॉम तिलक वर्मा, बट डोंट फॉरगेट संजू एंड डोंट फॉरगेट शिवम दुबे। आई थिंक बोथ ऑफ देम were very key in India's win, especially when we were 20 for 3 at the end of 4 overs. Shivam It was was a very awarded bad that situation. award of the turning match point, वो अवार्ड उनको दिया गया था, गेम गेम चेंजर चेंजर, गेम चेंजर, गेम चेंजर। सो और एक्चुअली आपने सही कहा कि वो जो लास्ट ओवर है ना, वो फहीम अशरफ से दिलाते हैं एक्चुअली, सी हैड टेकन 3 विकेट्स ऑलरेडी, है ना, उसका भी चौथा ओवर बाकी था, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रॉफ। नहीं नहीं, फाइन बोल्ड फॉल 4, no? Fine No, bowled he 4. he should have bowled that fourth one later on. He should have kept. He should have Kept, kept him for yeah, that yeah, one. yeah. Exactly. हाँ, And given Saim हाँ, Ayub one of the overs then. yes, Yeah, yes, absolutely, yeah, absolutely. Yeah, है ना, तो बिकॉज ही गॉट द इनिशियल ब्रेक थ्रू। yeah, आज yeah, दोनों गिल, हाँ, अभिषेक और गिल दोनों को रवाना किया उन्होंने हाँ, धड़ाधड़ करके एक्चुअली। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। it was very bad planning. Sir, Yes, one yeah. last question to all of you. Any comments on the controversy that followed and the drama that followed? I need the Italy? full program. I have so many thoughts on that, but let Hetvi go first. That was bound to happen, but it was stretched a little bit. अब हम कह रहे हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से खेलो, so I don't know. It should have been played that way. But who, Hetvi, as a observer and as again, I look on your Gen Z.
who would you put the blame on कि ये जो शुरू हुआ और जैसे खत्म हुआ, तो इसमें इसमें कहाँ पे किसका पड़ा, कहाँ आप blame, where would you put the blame on? I think I would put the blame on us, as in as the citizens who started the whole boycott thing. I Hmm. don't think I mean boycott शुरू हुआ तब वहां पे वो स्क्रिप्ट बना कि नहीं हैंडशेक नहीं करेंगे, to diplomatically manage the situation, to not be here or there, to play the game and to favor the boycotting sort of people as well. So I think the blame is on us who started the entire boycotting process and stretched the whole drama. I think that's a very good thought. I never looked at it that way. But I think fundamentally it starts from there, and I think you're very, very correct. That had that movement not started, that then that fear and the optics became important. That nahi karna chahiye. Maybe somebody saying that they shook hands in private and अभी public में खाली तमाशा करते, but obviously public में तमाशा करते, it optics है ना. This is Yeah. not Surya Kumar Yadav has no personal enmity with Salim Ali. So what is his name? Salman Aga, the captain, right? He has no personal enmity. वो तो जानता Yes. भी नहीं होगा उसको. Why will he not shake his hand? Yeah. But it became geopolitical, and then when it became geopolitical, the optics become very important. And I think you said it. I think you hit the nail on the head. Had that boycott not started, and if you want to boycott, why are you playing? I mean, they don't play. Either you play and then you say okay, play and watch normally, or boycott. And if it's pull up boycott, karo, tell the team not to go and sit back. And then but you don't want the penalty, then you will say that हमारा फेडरेशन है और फेडरेशन हमें पेनलाइज करेगा, हमें पेनल्टी पॉइंट्स देगी, हमारा पैसा जाएगा, वो सब तो इट्स ऑल गिव एंड टेक आई गेस. बट yes, fundamentally what you're saying is right, and I think the post-match comments, see, not shaking hands is one thing. I think that was, for me, in my mind, that's not crossing a line. But in the post-match this thing, when you say Operation Sindoor and dedicated to the, we all believe in that. He didn't say anything Yeah. wrong. The occasion was not right. You broke the rules. There is a rule from ICC not to do that, and then you do it, and then the ICC does not take action. It does take action, but very, I think, very lenient action. This goes against the grain of the sport. So I think स्पोर्ट को स्पोर्ट रहने दो. आपको जो भी करना है राजनीति के बारे में, राजनीति के लिए तो अब कितने मंच है, एक मंच नहीं है. अ, अनेक मंच है जहाँ पे आप राजनीति कर सकते हो. ये इस मंच को क्यों चुना आपने? ये तो ना तो रंगमंच है, ना कोई खेल का, ये तो खेल का मैदान है. खेलने दो. खेल है. और आपने खेल को इतना स्ट्रेसफुल बना दिया कि मैं तो कल मैच देख रहा था. आई डोंट थिंक आई एवर गॉन थ्रू सो मच स्ट्रेस वाचिंग अ मैच, बिकॉज इट्स लाइक as a citizen of India that in case India lost, in case, and somebody lit a match somewhere, it could have been a conflict. And we have seen it, right? In my lifetime, I have seen a few such instances where this has happened, where things have gone wrong. Something went wrong on the playing field, and it impacted society. And I think that fear is still there. It is my generation is still there. And I think that I was actually praying for Bangladesh to win against Pakistan, but that didn't happen. And then when this game started, I was praying, and I don't pray during a match. Honestly, this I'll confess on this program. First time I prayed during a match. God, don't let India lose. Not because I want India to win all the time, but the impact of this Yes, loss would have been terrible. tremendous. And I think I'm very grateful to the Almighty that जो हुआ वो हुआ. अब इसको let's put this to bed, let's put this aside, and let's go forward. I hope in the Women's World Cup the same tamasha does not happen. It won't have the same intensity because it's the Women's World Cup and it's not that followed in India or worldwide. But I hope we don't have this type of tamasha out there again, because India is playing, Pakistan is playing. They may come face to face, head to head. You don't know. So again, I think all very uncalled for. You are actually hitting the game at its fundamental roots. It is a gentleman's game. It is a great game of sportsmanship. Let's not take that away from the game. Narayan. Narayan sir, last comment from you. इसमें मेरे को क्या लग रहा है कि अगर यूएन जनरल असेंबली में अपने नेबरिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अगर ज्यादा कुछ नहीं बोलते जो उन्होंने कहा है, एक्चुअली दैट हैज मोर एग्रीवेटेड द सिचुएशन. देखा जाए तो अगर वो कुछ नहीं बोलते ना, दैट हैपेंड ओनली 3-4 days जस्ट बिफोर दिस मैच. Yeah. उन्होंने कहा, उसके बाद
अपनी मैडम पेतल, उन्होंने फिर जवाब दिया। तो ये बहुत कुछ चल रहा है, तो हो सकता है, मेरे ख्याल से देर कुड बी सर्टन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टॉप, पॉलिटिकल और अदरवाइज, विच में बी सेइंग कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। बट आई अग्री, गेम इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट। अभी आप देखोगे वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर, कोलम वी आर जॉइंटली डूइंग विद कोलंबो, एंड ऑल द मैचेस इन कोलंबो आर ओनली पाकिस्तान मैचेस, Yeah, है ना। इंडिया भी कोलंबो जाके मैच खेला। सो yeah, yeah. ये अभी जस्ट बिकॉज इट इज वुमन, अगर होना तो वही प्रोटेस्ट होनी चाहिए। व्हाई मैन एंड वुमन, व्हाई शुड वी हैव टू लेडीज ऑन द नहीं, पैनल, वही होगा, वही डिड होगा. एग्री विद Yeah. तो वो एक हो सकता है, लेकिन ठीक है। खाली एक मेरा एक ये कहना था कि जो क्रिकेटर्स अपनी टीम में, वेदर दे हैव प्लेड नॉट प्लेड, दे वर ऑन द बेंचेस, जितेश शर्मा और एक्स वाई जेड में, वो एक कप को उठाने का जो एक, यू नो 10 8 10 मिनट का जो जोश होता है ना, और द फायर वर्क्स एंड चैंपियंस लिखा रहता है, एंड यू जस्ट लिफ्ट अप, और देन इट इट बिकम वेरी वायरल, वो उनके हाथ से एक चांस चला गया है। सो दैट कुड हैव बीन गिवन। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आज आप कप भी ले आओ, वहां से मिल जाएगा, मेडल भी ले आओ, यहाँ भी देने के अंदर वापस वही होगा कि बैंगलोर जैसा कुछ फियास्को हो गया, तो वो भी नहीं होगा। सो दोज क्रिकेटर्स जिनके लिए एक फर्स्ट टाइमर है, उनके लिए, फर्स्ट और सेकंड टाइमर है, उनके लिए एक तरह से एक ये ओकेजन छूट गया है। दैट्स माय थॉट, लेट लुकिंग इट अदरवाइज। Yeah, Right? but then I think the last thing I would like to say is that we have to leave the victory behind. जीत गए अभी आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। और इसको जी। जीत को अब ढिंडोरा पीट के कोई मतलब नहीं, जीत गए हम, वी हैव प्रूव्ड आवर पॉइंट। सी, फॉर मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वी प्रूव्ड आवर पॉइंट। व्हाट पॉइंट डिड वी प्रूव? दैट वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, and we can come out of a crisis situation and we can beat the best of best competition. I think you have made your point. Now just go forward and don't do the mistake that the RCB made after the IPL and start blowing things up. Just I think विक्ट्री में भी ग्रेस होना चाहिए। और आप जब ग्रेस से जीतते हो, आप जब जीतने के बाद आप उदारता दिखाते हो, उसमें आपका बड़प्पन है, और अब छोड़ देते हैं इसको। मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। एंड वन लास्ट थॉट इज, अभी से इंडिया के पास कुछ 14 15 ही मैचेस खेलेगी वर्ल्ड कप 26 के पहले, है ना। तो ये जो 4 एरियाज हैं, फील्डिंग, कैचिंग, पेस बॉलिंग एंड मिडल ऑर्डर बैटिंग, इसके ऊपर मैनेजमेंट को, कोच को, कैप्टन को, सबको ध्यान देना चाहिए कि कैसे करें अपने इम्प्रूव अपने। वी आर नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड कप। Did you see Surya Kumar there this post match conference? हमने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग भी अच्छी की। Sometimes I love the guy. He's so natural, and he doesn't. I don't think he comes prepared. A lot of things of his is extempore, and when he does that, दिल से बोलता है, दिल से बोलता है। और जब आदमी दिल से बोलता है ना, आपके दिल को छू जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह से बात की उसने, इसमें जो फील्डिंग वाला जो किया उसने हैदराबाद में। I think that's a message to the team that boss, now do something. जी। तो ये था एशिया कप सीरीज जो हमने कवर किया। या प्रिया जी, जी, दिस वाज एशिया कप सीरीज एंड वील Yeah. कम बैक विद द नेक्स्ट सीरीज जो Frozen. आने वाला है। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Yeah. थैंक यू एंड वील सी यू सून। आओ देखें क्रिकेट